Japneet had requested you to give me the Japneet. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Have you got any mail having a request from my side to give an administrative privilege to the recording whatsoever you had done one of Sir, the apps? let me check once, sir. Just a minute. Check it out and do that first. Good morning, sir. Are we waiting for someone? I'm waiting for all to put their request. This was a request from the very first day. The can should be on. Yes, sir. You can check now, sir. Approved. Name itself. Okay. Fine. So are you all done with the installation of Docker on the Linux VMs of yours? Yes. Yes, sir. Can anyone from you voluntarily share your screen and show me the VM with Docker installed on that? Okay, sir. I'm sorry. Okay. Can you type a command Docker space image space ls? Docker DOCKER space image space ls. Image IMAGE. Docker space image space ls. Enter. Permission denied. Sudo. Type sudo before that. Okay. Now, Anish, had you registered a free account at Docker Hub? Am I audible to you, Anish? His mic is mute actually. Okay.
You're not able to unmute yourself. Okay. Hello. Now it is fine. Okay, you have got a Dr. Hub account with the name Anish 143. Okay, that is good. Can you okay? Can you go to the terminal itself of Ubuntu? Docker installed, right? Docker. Yes, sir. I'll give you a command, and you need to write that particular command in. All of you, please open your terminal where Docker is installed, the VM, and type this command, whatever I had published in the chat box. Type this command in here with sudo. Yes, with sudo. Yes, sir. It's showing downloading. I'll explain you all the steps, all the various artifacts what we are using over here in the commands itself. First, I need you people to go through or have hands-on on and have a amicable result out of it. Once we will get the amicable result, then I'll explain that what process you are gone through. Install. All the people are doing the same process on their VMs, Yes, sir. It's downloaded. still downloading for all. Okay. Now you people need to write the second command what I had posted over here in the chat box.
space must be there between run and IT and dash P. It will be in this state. Now go to your Firefox, this terminal, and go to the Firefox in Ubuntu itself. Type 127 in web address, type 127.0.0.1, colon 8080, 8080. Yes. So you have got a website posted onto some HTTP server. You can surf upon this website. You click any on this section, company, click security. Like this is surfable, a working sort of website which is hosted over there in your Docker instance only. Previously, what we were doing was in the first task itself, we had installed a VM or had deployed a VM. Then we installed some sort of HTTP server over that using the commands app or so. Then we had to put the web server or web pages or the website data onto that. Then after that, if I'll be hosting some sort of dynamic application, then I need to put the jar and then configuration needs to be done over there. Afterwards, the final output will come, or this tedious process needs to be done. But by using containers, by using the Docker images, we can do all this in 3 commands. So this will become very easy to spin up. We can always scale these things out. We can always scale down these things. You understood basically what you had gone through. A person who is not having much of the knowledge of the subject itself can be able to spin up the complex web servers or complex clusters by just few of the commands. All the prerequisite things were already being designed and packaged beforehand. You just need to run those things to the system. Now understood why practically Docker and these containers are that much efficient, that much fast to deploy, and that much fast to run. This basically do what this reduces the time of deployment. This reduces the man hours or manpower complexity. So it which will translate to reduction in costs. Reduction in costs for the projects itself. Okay. Now let me share my screen. All of you have done the same process in here and have got the similar results or not. If Yes, anyone is getting any sort of error, please point it out. Right. All got the same results. So let me share my screen. I'll explain you. You people are able to view my screen. Yes, sir. Yes, sir, visible. Is my screen visible to you all? Okay. Yes, sir. So to start with, let us take a look at what
Docker registry looks like. When you will be creating a Docker Hub account, your Docker registry look like this. You will be having a username or account name associated with you. Like Anish was having Anish that 123 or something. Everyone will have his unique account name. You people all have a unique account name of yours, and this account name must be globally unique. If I have a Rajiv KU Sharma, then it will not be assigned to any other Docker Hub account because this particular account will translate to all my repositories, and that global URL should be unique so that they can always access to my repository themselves if they are public in nature. Okay. Now you understood this particular account name, or what in Docker sense we say it's like a namespace. This must be unique global. You all have unique global. Now, after this particular account name or namespace, we'll be having a repository name. Repository is what? The name of the packaged Docker image, which will translate into some Docker container. So, like we had read in the previous session, that how containers are being spun up and what are the various ways how we can create the Docker images. That is basically prerequisite to spin up the container itself. So let us take here an example that I want a HTTP server, fully working HTTP server, to be containerized along with the user data, or what I can say along with the website data, whatsoever need to be served. So what I'll do one thing. I'll go to my Linux machine. I'll create a Docker file. Docker file is a particular artifact what will be comprising of various commands needed to create a Docker image. We'll be writing a some sort of script with Linux commands itself, so that we can uh, basically uh, teach the Docker engine to what to use and what to make. Basically, what Docker image should comprise of. That particular thing will be written into the Docker file. So in this case, if I want to create a HTTP server along with the data of the website, so what I need is I'll need a Docker file written, and I need a image or all the website images or HTML files or other things, may it be jar or something. That particular package to be copied into that Docker image so that it can be inherent part of the Docker image, and it should be then whenever it will be pushed onto the Docker repository like Docker Hub or so. So anyone pulling that particular image will also get the actual website data to be spun upon. So we'll see what this Docker image is. Opening the file. Very simple. Okay. In few lines only, I have written these simple lines 1, 2, 3, 4, and 5. In these 5 lines, the whole process is creation of Docker image with a sample HTTP server, web server, along with all the data of the web. I have written it from Ubuntu latest, means I'll be using the base image of Linux operating system, which is Ubuntu, and I want the latest version of Ubuntu, whatsoever will be present on their repository. So what will happen over here when this particular Docker file will be parsed? Then the first line will translate to
it will ask the Docker engine to go to Docker Hub repository, go to the Ubuntu named repository or namespace and see what is the latest version of Ubuntu Docker image present over there and pull that Docker image into as a base image for this new Docker image solution. So Docker images are layered in structure. I can always use my previously created Docker images and can impose some other sort of commands over that, put some new functions on that. Like if I want to add on something on that, I can always use a base image of previously created Docker and then impose the new functions or new functionalities over that and can create my own new Docker image out of that. So this is how what layered structure of Docker image translates to. So here what I am doing, using Ubuntu's latest base image, and that particular latest base image comprises of the basic kernel bindings to the host operating system. It is being created by Ubuntu, official Ubuntu itself. So we will be using that. Afterwards, I'm writing another command here. Run means it will ask the Docker file to run the proceeding or the command following the run command. So command is apt get update and apt get install. The same command like we use in Linux. It is saying apt get install -y means I need not to be in. I need not to write anything because once you will be using apt get install light HTTP, at some point in time it will ask you want to install this functionality, type yes or no. If I'll be saying -y, then it will always go with yes. So it will not be an interactive sort of installation. It will be a silent sort of installation. Silent means need not to communicate with the user. So I'm saying apt get install -y light HTTP. It will be going to the Ubuntu's repository inside. We'll be checking for light HTTP package and then we'll silently install light HTTP into that. Afterwards, what I'm saying, copy. Copy command means I want to copy this HTML folder. I'll be showing this. In the same folder itself where I am having the Docker file, with that I am having a new directory named HTML. And what is inside that HTML directory? Inside that HTML, there are various directories or folders and various JavaScript files along with HTML files. Basically, the whole user data of the website, all the web pages along with the scripting and all other functionalities in a packaged manner, also in a folder directory structure. Okay, now I'll be going out of this and will show you. So what it will be doing, it will be copying the HTML folder recursively, means all the contents of the HTML folder inside the newly being created Docker image. So in that Docker image, basically, if I am using the Ubuntu latest as a base variant, means it will be translating like that. I will be presented with a whole sort of directory structure of Ubuntu inside the container itself. So likewise in Ubuntu, normally I have directory structure. One is root, afterwards var, ww, and HTML. When I will be installing the light HTTP package, it will be creating these directories automatically. While installation means /ww/html inside var. So I'll be putting the data of my folder present along with the Docker file in the directory from where I am creating to the directly inside the Docker image. So this is copying of data from my virtual machine to Docker image itself. Data comprises of the website images, web pages, as well as the JavaScripting and all other functionalities needed to run the user data successfully. So after that, the copy of the data, I am saying expose port number 80. So what it will do, it will in the network diagram of the Docker
itself. So this image, Ransomware will be converted into container by running the Docker image. So it will be opening the port number 80 for incoming web traffic. So that is like opening the ports of firewall in Ubuntu to get the web server exposed to the external one. So this command will do like that. And then afterwards, I'll be giving a command to execute the configuration of LightSP. Likewise, in any of the web server, we have a configuration file what translates to that what should that particular web server be serving to. May it be some sort of rules that I want to serve only this particular subnet, I want to serve only the local networks, I want to. All those configurations will be by default. Now you are using the default httpd.config file, which will be opening the default address spaces for the web server. So I'll be in this command, I'll be basically invoking that configuration command so that the final result should be the service named light HTTPD responsible for serving the web request should be started. So in all these 3-4 steps, the whole Docker image will be created along with the user data, and what we will be presented with a tagged Docker image. What is tagged basically? I'll be explaining to you in a moment. See, like over here in Light HTTP, I have a repository on Docker Hub in Light HTTPD. I have a version. Basically, once we will be creating some sort of software now, in future, we want to upgrade that software with new functionality. So there will be version controlling, like version 1 of the application, version 2 of the image, like that. So for that, we will be using tags. Now, Light HTTPD is a sort of Docker image comprising of web server along with user data. That is taken place if we want to add on some new functionality into website, and we want to copy few more things into the website, and we don't want to fiddle up upon with the previous versions. So what we will be doing, we will be putting new functionalities in the HTML folder here. This HTML folder itself, we will be putting the new functionalities. Then we will be creating a new Docker image with new version. Like V1 was previously available, we will be creating that with V2 version. And then we will be pushing that version into the Docker Hub registry. Now, how this all will happen, I'll show you. I do. Proceed. Before that, these are the very basic Docker commands what will be used for basic functionalities. One is Docker image ls. Docker image ls will show that how many Docker images are present in my local VM. What should be used or to run the container. So Docker image is different from containers. Docker image is a packaged file. Like whenever we will be installing the operating system on the machines, we normally use an ISO file to install the operating system. How many of you had installed the Windows operating system on your laptop by yourself anytime by using the ISO file, USB drive or CD drive? Okay. Can any one of you explain what is the process? What process we have followed? Sir, at first we have to boot the pen drive. Okay. Sir, I'm In the audible pen now? drive, in the pen drive itself, the first question here, what you had put in the pen drive itself in the first place? We can't even boot with the MP3 pen drive or a pen drive containing the MP3 file. So what is in the pen? Sir, I think we have to put the ISO file with the help of some software like Power ISO and like that. Yes, ISO files. ISO files are what? Basically, ISO files are the whole operating system packaged in a manner so that it can be
it can be extracted onto the host of machine itself in a particular manner when the installation will be going on. Is it fine? Yes, sir. All the system32 files, you know, now system32 Windows folder in Windows operating system, program files, Windows folder, and in Windows folder there is a system32 names folder where all the DLLs, dynamic libraries, and all the critical operating system files will be present. You know the structure of Windows? Anyone? So basically, ISO file does what? It has all the critical dynamic libraries and all other critical files inside it. It will just go and while installation, it will extract all those files into the particular folders where they should be destined to. This is how, and then afterwards they'll be creating registry entries and all, so that the bindings and between the files can be done in a particular fashion, so that things can spin up in a flawless manner. Okay, this is what basically in a very high level, or we can say from above 30,000 feet view, what is actually installation of Windows. Okay, so in the similar fashion, when we will be having an ISO is nothing but a packaged operating system. When that packaged operating system extracted onto a physical machine itself, and it will be using the resources of machine like hardware resources, and it will be interacting with the RAM as well as processor as well as video drivers as well as other keyboard drivers. Then wait a second, having all. So what I was talking about is the difference between ISO file and the actual container, the difference between Docker image and actual container. So we are using the analogy of Windows operating system installed on a hardware and Windows ISO file needed to install the operating system. The difference between ISO file and the installed operating system is those will be having the similar sort of files, like files used by operating system to interact with the memory, to interact with the processors, to interact with the various drivers. Those files like dynamic libraries and all, when packaged inside a pack means ISO, they are called ISO files. So when they will be extracted onto the physical machine and start interacting with the hardware, then it is called a installed operating system. Same is the difference here. When all the artifacts or files needed to create a container packaged inside a pack or so, it is called a Docker image or it is called a image. And when that particular image is the files inside that particular image are uh, consumed by the hardware or are extracted onto some machine itself, so that it can be consuming the hardware and start running the things processes out, then it is called container. Understood? Difference between image and container. Anyone?
Fine. Now, here we were basically at difference between image and container, and we are talking of how to create a Docker image also. To see what particular Docker images are there in a system, we need to write the command Docker image ls. It will be giving a list of all the repositories along with the tags. Tags are nothing but the versions of the same repository. Right? HTTP can have v2, can have v3, v4. That will be different images. That will be defined by image ID, unique ID, primary key. And when those images are created in my system, if I have created in my system, then these images are created 2 days ago, this much amount. And what is the size of that particular image? And here, the first part will be the account ID or namespace. Second part will be the name of the repository itself. Right. You people understood the terminology? This session should be interactive. Because yesterday I already have told you that interaction is must. For you people to learn onto the things now, you need to start interacting. Have the discussions going on. Until and unless you people not be outspoken or interactive in nature, you will be gaining very well. That is point. I can give you the example of few of the candidates what I had gone through in my life itself, and those candidates, the unique quality between in those candidates was their capability to interact. And today they are at a very different level. One of the examples what I can give you is Anirudh. Anirudh, person who joined TransLab approximately 1 year and 2 months back as an intern. He got his interview. He was taken by TransLab as an intern on year and 2 months ago from MIT Jammu, Engineering College MIT Jammu. So he joined us at that point in time, and his internship was 9 months or so. So he, while undergoing his internship, he was sitting over here with us in Jammu office itself. But his unique quality was that he was not hesitant to interact. He started interaction with everyone. He started interaction with everyone. With me, what I got from his positive thing was he never sat idle. At one time or at other point in time, once he will be in impression that anyone is free, like senior developer or any other cloud solution or myself or anyone, and we see the person is not having some sort of task going on with him. So he came to what his quality is, आ जाता था after that फिर interact करना शुरू कर देता था और ऐसी बातें पूछता था मतलब अच्छा लगता था उससे लेट्स से एक दिन बैठे हुए थे नेटवर्किंग की बात चल रही थी ऐसी बात चलना शुरू होगी एडवर्ड स्नोडेन की तो नॉर्मल डिस्कशंस होना शुरू हो गए तो मतलब ऐसी कोई शर्म नहीं होती थी कि भाई हम फालतू बात कर रहे हैं कोई फालतू डिस्कशन हमेशा एक पॉजिटिव एक कंक्लूजन पे पहुंचती है ना जब बहुत कुछ सिखा के जाते तो इन दैट केस हम नॉर्मली कहीं तो बात करना ये थी कि भाई नेटवर्किंग की बात करते हैं हमारे यहाँ पे सर्वर्स है जम्मू में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करता था कि भाई
सर्वर्स की नेटवर्किंग होती कैसे है एक्चुअल में। क्लाउड के ऊपर उसने तो किया, एजर के ऊपर काफी अच्छे से करता था चीजों को हैंड ऑन अपने अकाउंट। बट जब वो बेस लेवल पे बात होती थी ना कि एक्चुअल में मैक एड्रेस की बाइंडिंग कहाँ होती है, वो क्लाउड में नहीं दिखता। और सिर्फ आईपी के ऊपर बात कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। बट उसको क्यूरियोसिटी थी जानने की एक्चुअल में अंडरलाइन चीजें होती कैसे हैं। तो सॉर्ट ऑफ व्हाट आई कैन से इसको माइंडसेट हैकर वाला कि मैं चीज को ब्रेक डाउन करके दूर अंदर से कंसेप्ट समझ लूंगा, ताकि उस कंसेप्ट को यूज करके मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाऊं या एक ऐसी चीज बनाऊं जिसमें मैं एक एक सॉर्ट ऑफ हैकर माइंडसेट फील कर सकूं। तो बैठे हुए नॉर्मली बात कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रोटोकॉल चलते हैं, IMAX चलता है यहाँ पे, नेटवर्किंग में एनटीपी चलता है। तो अब अंडरलाइन ये बात भी अंदर होता है कि आईपी एड्रेस तो स्विचेस के अंदर बैठे हुए, स्विच तो लेयर 2 वाला है, वो तो आईपी एड्रेस जान नहीं सकता, बट फिर भी बातें हो रही हैं नेटवर्क में। कैसे होती है? मैक एड्रेस के थ्रू होती है। बात वहाँ पे है कि मैक एड्रेस कहीं ना कहीं तो आईपी एड्रेस से बाइंड होता होगा, तभी तो वो फ्लॉलेसली नेटवर्क की कम्युनिकेशन चलती है हमारे सिस्टम्स के बीच में। बात तो सही है, मैंने भी नहीं सोचा था उससे पहले। हम वैसे ही बैठ के एक्सप्लोर करना शुरू कर गए। अब इसमें कोई शर्म की बात नहीं, मुझे नहीं पता डीप नॉलेज, बट इंटरेक्शन शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुई, तभी तो आगे हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उसी डिस्कशन में मेरे को भी काफी अच्छी चीजें समझ आई। ऑब्वियसली गूगल पे किया, चीजें पता चलना शुरू हुई कि हमारे यहाँ पे कैश रहती है लैपटॉप के अंदर। कैश को जो बेसिकली हमें अगर रिमूव करना है कहीं पे, हम डेडलॉक में सकते हैं, लूप होल में किस कमांड्स को यूज करके उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर और वहां से अंदाजा होगा कि भाई उसके अंदर तो एक लूप होल भी होता था जिसको प्रीवियस आई बिलीव 9-10 महीने पहले जीरो डे अटैक की तरह माना गया, और लोग फ्रीली नेटवर्क के अंदर घुस जाते थे बिना किसी भी ऑथराइजेशन के, बाय यूजिंग मैट फेक मैक एड्रेस बाइंडिंग। बेसिकली आईपी एड्रेस कुछ भी हो तो वो फेक मैक एड्रेस की अपने मशीन को उसके साथ बाइंड कर देते थे। जो हमारा प्रोटोकॉल राउटर होता था वो उसी को ट्रांसलेट, क्योंकि लेयर 2 स्विच है उसको तो आईपी पता ही नहीं होगा, उसने सिर्फ मैक एड्रेस देखना है, तो उसके थ्रू मेरे को एक्सेस मिल जाता सब चीज़ों का। तो अच्छी चीज लगी। वैसे वो ग्रीन एक दिन बैठे हुए तो बात हो रही थी कि मतलब फालतू की डिस्कशन से शुरू होती थी, और एक रिलेटेबल चीज पे पहुंच जाते थे हम, जो कि एक अच्छी नॉलेज देके जाती थी। फालतू में बैठे हुए तो बात शुरू हुई कि भाई पहले हम जियो का जो फाइबर लगवाते थे अपने घरों पे, उसमें ना पीछे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं 2, होते हैं, ऐसी सी बात है। तो क्यों होते हैं जी? और उसमें ना पेन ड्राइव भी लग सकती है आम डाटा के लिए, और प्लस हार्ड ड्राइव भी लग सकती है, वो ठीक है। बट अभी जब हम पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो FTPS को तो डिसेबल कर दिया उन्होंने। वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी ऐप जो है जियो होम की, उसके ऊपर जाके थ्रू फाइल शेयर, मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल के थ्रू वो मेरे को दिखा देते हैं। बट उसमें दिक्कत ये होती है कि मेरे को जियो की ऐप होना जरूरी है, मैं कोई थर्ड पार्टी ऐप के साथ पैसा नहीं ले सकता। FTP में ये होता है कि मैं अगर FTP इनेबल कर दूं तो कोई भी, मे इट भी मेरे लैपटॉप पर डायरेक्टली FTP, कोई भी क्लाइंट बैठा हुआ है, कुछ भी बैठा हुआ है, या मेरे मोबाइल में FTP क्लाइंट डाल दूं तो मैं यूज कर सकूंगा। तो वहां पे दिक्कत ये है कि फाइल शेयर थोड़ा सा डिलेड था, क्योंकि ओवर द इंटरनेट घूम के आता है वो सारी चीजें आईपी के ऊपर। और अगर मैं सीधा FTP का लेता तो मैं होम नेटवर्किंग कर सकता था, एक मैस सर्वर बना सकता था जियो के राउटर को यूज। मैस इज व्हाट, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जो फाइल्स को शेयर करने के लिए काम आती है। आप देखते हैं बात जेन्युइन थी। उन्होंने क्या किया था, अपने फर्मवेयर के ऊपर कुछ बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि हम FTP वाला जो पैकेज है उसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो द थिंग इज, फॉर देयर रेवेन्यू बेसिकली, अगर ऐप के ऊपर हम देखते थे उनके फाइल्स को तो वो ऐड देते थे, एडवर्टाइजमेंट। तो वहां से वो कॉस्ट, मतलब पैसा कमाते थे। अब वो क्यों चाहेंगे कि कोई बंदा अपने घर में फ्री में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ FTP लेके और हाई थ्रूपुट के बाद वो मेरी एड रेवेन्यू कम हो जाए। फॉर दैट रीजन उन्होंने, अब उस बात पे हम दोनों की डिस्कशन शुरू हुई, तो बात यहाँ तक पहुंची कि देखते तो है एक्चुअल में होता क्या रहा, कैसे बंद किया उन्होंने। धीरे धीरे पता चला कि जो राउटर के अंदर ना बिजी बॉक्स नाम की लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाली होती है उन्होंने, RIL वालों ने। कुछ नहीं होता, हमारा जो ONT डिवाइस होता है वो बेसिकली एक लिनक्स के ऊपर चलता है मशीन के अंदर। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पिन हो रहा है, बहुत ही कर्टेल्ड है, शॉर्ट, छोटा, मतलब
बड़ी बड़े उसके ऊपर पैकेजेस वगैरह कुछ नहीं है। बेस वर्जन का एक लिनक्स है, वो कुछ चीजें चलाता है। एक वो क्या चलाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम का एक सर्वर चलता है उसके, आईपी टीसीपी आईपी नाम का पूरा स्टैक चलता है उसके ऊपर। जो हम 192.168.29.1 करके अपने घरों में वेब पेज देख लेते हैं ना अपना, वो क्या है, एक वेब सर्वर चल रहा है उसके ऊपर। उसी के अंदर उसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और मैं उसके ऊपर जाके अंदर देख सकता हूँ कि भाई मेरे को कौन सी फायरवॉल का पोर्ट ओपन करना है। उनका बेसिकली वो लिनक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। हम और अंदर गए उसके भाई, उसके कि भाई क्या होता है, थोड़े रिसर्च करके लैंग्वेज यूज करते थे, लुआ, LUA, एम्बेडेड सिस्टम्स की लैंग्वेज होती है, वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसके अंदर। वो क्या करता था कि जो हमारी वेबसाइट जो भी मैं कमांड देता था उसको ट्रांसलेट करवाता था इंटरनल सर्विस के ऊपर। लेट इट बी, अगर मेरे को FTP सर्विस को ऑन करना है तो वो ट्रांसलेट करता था लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा हुआ है कि भाई इसको सर्वर को ऑन करना है कि नहीं करना है, इस वेब पेज को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अब दिक्कत ये थी, उन्होंने क्या किया कि जो उनका इंटरफेस आता था पोर्टल के ऊपर 192.168.29.1 के ऊपर, वो एक पहले तो उन्होंने जो FTP वाला पेज था उसको ही हिडन कर दिया, वो देख ही नहीं सकेंगे आप, वो क्लिकेबल ही नहीं रहा। ठीक है, वो ग्रेइश सा हो जाता है। और फिर अगले वर्जन का फर्मवेयर आ गया जब, तो उन्होंने वो पेज हटा ही दिया, उसका लिंक भी हटा दिया, भाई इस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। बट अंडरलाइन उन्होंने भी देखे तो सही है क्या। बट अब जब मेरे को उस ONT डिवाइस के लिनक्स के अंदर जाना है और उन फाइल्स को असेस करना है, जहाँ पे वेब सर्वर जो आपने भी देखा है तुमने, एक HTTP नाम का फोल्डर होता है, www के अंदर एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मैं वेब फाइल्स रखता हूँ बेसिकली अपनी, और एक HTTPD सर्वर चलता है मेड बी अपाचे टॉमकैट, और उसके ऊपर चलता था लाइट HTTPD। लाइट HTTPD बेसिकली वेब सर्वर है, लाइट वर्जन है HTTPD का, बेसिक सारे फंक्शनैलिटीज करता है वो। लाइट HTTP इंस्टॉल्ड था पैकेज उसके ऊपर। बट दिक्कत ये है कि उसके अंदर क्या क्या फाइल्स का एक्सेस लेना है, या फिर जो भी उसके लिए प्रिविलेज चाहिए, तो वो मैं बेसिकली जब भी ONT डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता हूँ या आप लोग करोगे, आप सिर्फ एक वेब पेज को खोलते हो, IP एड्रेस डालते हो 29.1:80 करके हैं, जो भी 80 नंबर पर, तो आपको वेबसाइट दिखती है। आप बेसिकली एक्चुअल में जाके राउटर के अंदर के लिनक्स के यूजर की तरह थोड़े जाके आप कुछ भी कमांड चला सकते हो, नहीं चला सकते। आपको तो सिर्फ वेबसाइट दिख रही है ना, उस वेबसाइट में जो भी आप फंक्शन दोगे या जो भी कमांड दोगे, वो उन्होंने पीछे अपना एक लुआ का कोड लिखा हुआ है लैंग्वेज में, जो ट्रांसलेट कर रहा था क्या इसको करने देना है कि नहीं करने देना, क्या है सर उसको। तो अगर वो अपने कोड में से फंक्शनैलिटी हटा दें तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब हैकर माइंडसेट जब आता है तो भाई मेरे को करना है, कैसे करूँ, उनका तो सही, मतलब मेरे को एक ये तो दिख रही है कि आपका ये, बट आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने कोड ही हटा दिया उसमें से, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मेरे को टनल ही बंद कर दी जब आपने वो सुरंग रखी ही नहीं, खत्म ही कर दी, तोड़ दी, तो आगे कुछ नहीं कर। अब दूसरा वे है कि मैं रूट असेस, रूट असेस क्या होता है लिनक्स में, जब भी आप जाते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको अंदाजा होगा, एक तो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, एक होता है रूट यूजर, sudo, जिसको सारी परमिशन है, वो खत्म कर सकता है सारी चीजों को, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उस पर लिनक्स है तो कोई ना कोई रूट असेस भी होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा, टेलनेट करके या SSH करके। हम नॉर्मली जब भी हम विंडोज लिनक्स मशीन को लेते हैं क्या करते हैं, SSH करते हैं। अब देखा वहां पे उन्होंने पोर्ट नंबर 22 और टेलनेट का पोर्ट ही ब्लॉक करके रखा हुआ है उसमें। मैं वे में गया और कि नेटवर्किंग इस हिसाब से की है कि पोर्ट नंबर 22 और 80 है ही नहीं, मैं जितनी मर्जी उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजूँ, बोलता है पोर्ट ब्लॉक, फायरवॉल अंदर लगी उसके अंदर, इंटरनल फायरवॉल, अपने लिनक्स पे नहीं जाने देता। उन्होंने पूरा फुल प्रूफ रखा हुआ। जब मैं बोर्ड नंबर 22 पे ऐसे ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ पे उसको लॉग इन करूंगा, कर ही नहीं पाऊंगा, नॉट पॉसिबल। अब एक दो दिन हो गए हमें, हम दोनों अपने अपने तरह से कहते हैं ना, एक कंपटीशन सा बन जाता है, तो हम दोनों अपनी तरह से भाई एक उसमें पहुंच गए कि भाई देखते हैं कौन कौन क्रैक करता है। हमने कोई आइडिया निकालना है कि मेरे को जाना है, टारगेट हमें पता है, हमने FTP सर्वर को इनेबल करना है, और वहाँ पे दूसरी तरफ जियो बैठा हुआ है, जियो के बाहर से इंजीनियर्स जो कि रोक रहे हैं कि नहीं करने देना, क्योंकि उनका रेवेन्यू है। तो यहाँ पे हम दोनों बंदे पागलों की तरह बैठे हुए हैं कि डिस्कशन एक दिन ऐसी फालतू में हुई, तो हमें करना है यार, बस वही करने में क्या पता क्या कुछ सीख जाए। अब हर बंदा अपने दिमाग से सोचता है, अब माइंडसेट इस हिसाब से होता है हम दोनों का कि भाई क्या किया जाए, कहाँ पे लूप होल ढूंढा जाता है, कैसे मैं अंदर घुस पाऊंगा, कोर्स ब्लॉक है, सब कुछ खत्म है। अब एक दिन बैठे हुए में ध्यान आया,
भाई फर्मवेयर अपडेट नाम की इन्होंने फंक्शनैलिटी दी है। फर्मवेयर अपडेट क्या होता है, जब भी मैं जियो के राउटर पे जाता हूँ तो एक ना पेज आता है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप फर्मवेयर अपग्रेड कर लो अपना। उसमें एक दो तरह से होता है, एक होता है ओटीए के थ्रू, ओवर द एयर, डायरेक्टली जियो अपने इंटरनेट के सर्वर से जुड़ेगा, वहाँ पे फर्मवेयर पैकेज नथिंग बट आईएसओ फाइल, जैसे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पे आईएसओ आएगी और नया वाला अपडेट कर देगी उसके ऊपर। और दूसरा होता है कि मैनुअली आपके पास फर्मवेयर पड़ा हुआ है, फर्मवेयर इज हियर आईएसओ फाइल, तो उसको आप अपलोड करो यहाँ पे और नया वाला फर्मवेयर कर दो। वो भी तो फर्मवेयर अपडेट के साथ ही तो फंक्शनैलिटीज को ड्रॉप करते थे। अब हमें एक वहाँ पे लूप होल में फर्मवेयर, बट अब हमने देखा कि ट्रैक किया जो ओटीए पे फर्मवेयर आता है उसका वेब यूआरएल एड्रेस है क्या, तो हमें एक एड्रेस मिला वेब सर्वर का, आगे उसके यूआरआई का पूरा, तो भाई इसके अब अगर ऊपर हम हिट करें तो मेरे मॉडल का जो फर्मवेयर था वो मुझे मिल जाएगा। अब वायर टेप किया उसको, अब मुझे एक फर्मवेयर पैकेज मिल गया, हमने उसी एड्रेस के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजी sudo, और हमें उन्होंने डाउनलोड पे दे दिया पूरा फर्मवेयर। वो फर्मवेयर मेरे पास आ गया। अब दिक्कत यहाँ पे वो वाला फर्मवेयर हमारा इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड करके रखा हुआ है उन्होंने कि भाई कोई बंदे को अगर मिल भी जाए वायर टेप करके तो हम उसके अंदर घुस ही ना पाए। अब जब घुस ही नहीं पाएंगे तो दिक्कत पड़ जाएगी, क्या करेंगे उसको। फिर आगे हमने क्या किया कि भाई काली लिनक्स आया इसके बाद, इसके ऊपर ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं काली लिनक्स इज एक टूल, बेसिकली सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो वहां पे ना एक था टूल रिवर्स इंजीनियरिंग करने, उसमें ये था कि जब आप फर्मवेयर का आईएसओ देते हैं ना, जो कि उसमें होता है पैकेजेबल फॉर्म में जब इंस्टॉलेबल, तो उसको ना आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। वो सेट ऑफ वेरियस फर्मवेयर के साथ उसको कोड को मैच करेगा और जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं ना वो निकाल दे। तो वो टूल हमारा चला लगभग 48 आवर्स तक लगातार ब्रूट फोर्स किया उसने। तो अल्टीमेटली हम वी वर एबल टू गेट इनटू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द फर्मवेयर। अंदाजा लगा कि भाई इसके अंदर ये ईटीसी है, ये वाला है, क्योंकि वो पैकेज है एज पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स, एक्जेक्टली वही फाइल है, वही तो जाके वहां पे एक्सट्रैक्ट होगी। एक फाइल हमें मिली सर्वर डॉट की के नाम से, सर्वर डॉट की थी उसकी प्राइवेट, वाया रिवर्स इंजीनियरिंग प्राइवेट की एक्सट्रैक्ट हो गई। अब वो वही प्राइवेट की थी जो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होती फॉर इंक्रिप्शन पर्पसेस। प्राइवेट की अगर आपको मिल जाए, आपको अंदाजा है पब्लिक की अवेलेबल होती है, प्राइवेट और पब्लिक की कॉम्बिनेशन से ओपन एसएसएल सर्वर चलाओगे आप कहीं पे भी, आप कोई भी फाइल डिक्रिप्ट कर लोगे जो उस वाली प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्ट हुई हुई है। अब हमने क्या किया कि उस पे ना एक रिसोर्स आता है अल्टीमेटली, जब आपने राउटर्स पे देखा ना वो कहता है कि बैकअप कर लो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस का। अगर आपको नए से राउटर को कभी भी रीसेट करना है कुछ करना है तो पुराने वाले यूजर पासवर्ड का बैकअप ले लो। तो बैकअप क्या करता है कि आपकी स्टेट पूरी की पूरी वो दे देता है आपको एक इंक्रिप्टेड फाइल में। तो वो उसमें ये भी होता है कि एफटीपी सर्वर ऑन है या ऑफ है, आपके जो भी अंदर इंस्टॉल्ड पैकेज है उनका क्या स्टेट। हमने बैकअप लिया उसका, तो फाइल आ गई इंक्रिप्टेड वाली, हमारे पास पब्लिक की पड़ी हुई थी, हमने उस फाइल को डिक्रिप्ट किया, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ गई। उसके अंदर सबसे पहली लाइन में एक कोड पुट किया हमने, क्योंकि वो इंस्टॉलेबल मतलब वो फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है, क्योंकि बैकअप को रिस्टोर भी तो करते हैं हम। बैकअप को रिस्टोर करेंगे, एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट करता है उस वाली बैकअप फाइल को और सारी की सारी सेटिंग्स को अंदर सेट कर देता है। अगर नया मैंने ओएनटी या राउटर को रखा हुआ है और बैकअप को रिस्टोर करता हूँ तो जिस बैकअप वाली स्टेट में होता है तो उस स्टेट में चला जाता है ना पूरा राउटर, जो जो उस वाली स्टेट में होता है। तो वो कैसे होता है कि एक्चुअल में बैकअप फाइल को एग्जीक्यूट करवाता है। हमने क्या किया कि उस बैकअप फाइल को कॉपी करके उसको डिक्रिप्ट किया। पहली लाइन में हमने क्या डाला, सबसे पहले लाइन में लिनक्स, क्योंकि लिनक्स था वो, ये कमांड डाली कि भाई अपना टेलनेट पोर्ट ओपन करो, अपना एसएसएच पोर्ट ओपन करो, जो कि उन्होंने क्लोज रखा हुआ है। दो कमांड से। तीसरा हमने लिखा कि रूट यूजर का पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि बैकअप एज ए रूट चलता है। रूट यूजर का रूट नाम है, पासवर्ड हमने अपना सेट करवा लिया। अब उस बैकअप कर देना रिस्टोर से, अब तो उस वाले बैकअप को जो ह्यूमन रीडर है उसको वापस उसी पब्लिक प्राइवेट की के साथ हमने कर दिया इंक्रिप्ट, ताकि उसको पता ना लगे कि कुछ भी चेंज हुआ है। वैसे ही डिक्रिप्ट किया था वैसे ही डिक्रिप्ट किया, उसके लिए वो सेम है। हमने फिर से रिस्टोर किया, रिस्टोर सक्सेसफुल हुआ,
रिस्टोर होते ही पहली बार 3 कमांड चली, एक तो एसएसएच पोर्ट ओपन हो गया, एक तो रूट यूजर का पासवर्ड हमारा वाला हो गया। अब आप 22 नंबर पोर्ट के ऊपर अपने 122.29.1 वाला आईपी जो आपके राउटर का आईपी, उसको एसएसएच करो, अपना रूट का पासवर्ड डालो, आपको लिनक्स का इंटरफेस आ जाएगा एज ए रूट यूजर। अब अंदर चले गए, नो स्काई करेंगे, कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, जो मर्जी चेंज कर लो, आप उनका पैकेज हटा के अपना पैकेज डाल लो। अब अंदर देखने में मिल रहा है कि वो सबसे पहले गया रेडियस सर्वर से बात करते हैं, रेडियस पैकेज था वो। जैसे हम कहते हैं ना, अपने मोबाइल ऐप के ऊपर कोई वाईफाई के यूजर को ब्लॉक कर देते हैं, कोई वाईफाई का एसएसआईडी चेंज कर देते हैं, पासवर्ड चेंज। एक्चुअल में ये पैकेजेस हैं उस राउटर के अंदर चल रहे हैं, वाईफाई के यूजर्स को यहाँ पे जो भी है चेंज कर सकते हैं। वो थ्रू रेडियस सर्वर कनेक्ट होते थे, रेडियस सर्वर उनका ऐप के साथ कनेक्टेड सेंट्रल प्लेस, उसके थ्रू एक वाया डक वाया चैनल सारा कुछ हो रहा है। तो आप कुछ भी कर सकते थे, आप IPv6 टैग को इनेबल करो, V6 को डिसेबल करो, जो भी when you are using that। this is now actually कहाँ से शुरू हुआ, एक आइडिया से कि भाई उन्होंने क्यों रोका है और कहाँ तक पहुंचे, हमें नहीं अंदाजा था कि शुरू में, टू बी वेरी फ्रैंक, इस पूरे चीज से पहले हमें नहीं पता था कि एक्चुअल में ना ओपन एसएसएच को यूज करके एक्चुअल में हमें कीज को कैसे यूज करना है, कैसे चीजों को डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करना। और मोर ओवर द थिंग वाज कि हम लॉजिकली ये थिंक कर रहे थे कि कैसे किसी चीज, कैसे लूप होल ढूंढा जाए, और वो चीज कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, वो आपको सोचना पड़ेगा कि लूप होल है क्या। वही एक छोटी सी चीज सी बैकअप रिस्टोर, अगर उसको आप वायलेट करते हो या उस चीज को आप इस हिसाब से देखते हो कि वो आपके लिए लूप होल बन जाए, तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज गो एनीवेयर। तो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर इज कि अगर आपका माइंडसेट ये है ना, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। नो, द पर्सन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इज 1 साल 2 महीने पहले उसने ज्वाइन किया, लगभग 4-5 महीने पहले उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट, बट उन दो टाइम्स में हमारी इतनी रिच डिस्कशन हुई, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उसने सबसे बहुत कुछ सीखा, सिर्फ बातों से, मतलब बातों इन द सेंस कि मतलब डिस्कशन पॉइंट शुरू हुए उस वजह से। तो आज वो बंदा कनाडा में था, ट्रांसफर के साथ ही है, हमारे ही प्रोजेक्ट में है, NSPIC प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। मैं उसकी ग्रोथ बता रहा हूँ फील्ड में हुई, जैसे उसने इंटर्नशिप के बाद शिफ्ट किया अपना ट्रांसफर में। हम लोग ना जब ज्वाइन करते हैं, हम लोग थे जो इंटर्नशिप के बाद जो एक्टिव पोजीशन में भी ज्वाइन करते हैं, उनकी पर एनम CTC 6 फिगर्स में होती है नॉर्मली, ऐसे ही कुछ नहीं, 6 फिगर्स में CTC मिलती है, 6 डिजिट्स होती है उसके स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं। इंटर्नशिप में तो चलो बहुत काफी कम मिलता है, छोड़ दो। तो जितनी लोगों की एज इंजीनियर ज्वाइन करने पे CTC होती है पर annum, वो बंदा आज उससे ज्यादा पर मंथ कमाता है इतनी देर में। इंटर्नशिप की इमीडिएट बात, मतलब लार्जेस्ट लीप कहाँ से आई, लार्जेस्ट लीप की डेडिकेशन, उसकी थिंकिंग से यार। उसके बाद मैं मेरे को उसने कुछ कोर्सेज, मतलब वो था एक्चुअली कुछ कोर्सेज रहते हैं वो उसने ज्वाइन किए थे, वो परचेज करता था, तो उसकी हॉबी थी चीजें ऐसे परचेज करने। वो थे आई बिलीव कुछ $100 के कोर्सेज थे, कुछ ऐसे थे, तो टॉप ऑफ द लाइन कोर्सेज वो लेके रख लेते थे। तो भाई इसके रेट बढ़ जाएंगे, काफी महंगे होते हैं जो भी, नॉलेज ग्रैब करने की एक ना वो थी, दैट इज समथिंग व्हाट मेड हिम टू ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो वो एनालिटिकल थिंकिंग, शर्म खत्म, शर्म इन द सेंस को होनी ही नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिले। अल्टीमेटली द थिंग इज वी आर इन ए पोजीशन जहाँ पे हमें सीखना है, तो चाहे किसी से भी सीखने को मिले यार। और अगर हम हिचकेंगे ना तो नुकसान हमारा है, सामने वाले का तो कुछ नहीं जाना, उसने अपनी जिंदगी जी ली हुई है, वो कहीं पे पहुंच गया हुआ है, ठीक है। अगर हम उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, फायदा हमारा ही है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वरना हमें लगेगा टाइम इस चीज को समझने में। और अगर हम उसकी पूरी नॉलेज को अपने अंदर एडॉप्ट कर लें, तो देन वी विल बी लाइक दैट कि बहुत तेजी से वो सारे चीजों को, प्रोसेस को पार कर ले। सेम विद अनदर गाय, हिज नेम इज आर्यन चौधरी।
हमारे साथ क्लास लैब में काम कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए क्लास लैब में काम करते हुए। सारा यूनिवर्सिटी से ज्वाइन हुआ था। आपने आई बिलीव नाम सुना आर्यन का, चंडीगढ़ से ही काम करता है। इज एन एक्सेप्शन। तो बहुत बार ऑफिस में के लिए बोला गया, बट ड्यू टू हिज मतलब सब लोगों को बोलना कि वो भी आप ऑफिस ज्वाइन कर लो, वर्क फ्रॉम होम कुछ भी है, वो प्रोजेक्ट में है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट में है कॉल के, बट फिर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। क्यों ये एक्सेप्शन दी जाती है चीजों को जो एक्सेप्शनली गुड होते हैं, उनको मिल सकती है। तो क्यों अब 2 साल पहले उसने ज्वाइन किया, आप लोगों की छुटकारा से ही था, चंडीगढ़ से ही था। तो शुरू किया उसने एज इंटर्न। उस टाइम पे कुछ इतनी ज्यादा बैकग्राउंड ट्रेनिंग होती नहीं थी, क्योंकि अपने से ही सीखना पड़ता था। इसलिए आप बाकी से भी इंटरेक्शन हुई होगी, तो वहाँ शुरू में अपने से ही सीखा, नहीं क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग से नहीं। तो उसको टास्क दिए गए और उसका बोला गया कि भाई तू डॉक्टर को देख ले, तू मरीज को देख ले। बंदे ने खुद से पढ़ा शुरू किया। उसके बाद हमारी टीम में आया। हमने भी जो उसकी भी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, डिस्कस था। वो भी डिस्कस करता था चीजों को लेकर। अभी भी हमारी अगर चैट देखोगे, साथ में जम्मू में हूँ, वो चंडीगढ़ में है, करते हैं पंचकुला में। तो वो वे मोर इंटरेक्टिव। तो कुछ भी दिक्कत होती है तो एकदम से पूछ लेता है, जो भी हिसाब से। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मतलब क्वालिटी उसके अंदर जिनको भी मैंने देखा ना, जो बहुत आगे पहुंचे हैं और बहुत जल्दी पहुंचे हैं, जिनका करियर बहुत फास्ट आगे प्रोग्रेस किया है, उनके अंदर एक क्वालिटी रही, वो ना दूसरों की नॉलेज है, बहुत तेज से ग्रैब करते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या करना, मतलब वो देखते हैं कि मेरे को कहाँ से नॉलेज मिलेगी। बस दे आर हंग्री ऑफ। वो भी ये है कि उसने डॉक्टर्स के ऊपर शुरू किया, टिबिलिटीज के ऊपर शुरू किया। अब क्या गया कि मास्टरी होती गई, हमारे इंटरेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी, हम डिस्कस करते थे, नई चीजें सीखने को पूरी टीम को मिलती थी। ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे धीरे वो बंदा इन्वॉल्व हुआ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में। आज वो बंदा एक हैंडसम, वही सेम स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। पर बाद में क्या हुआ, जब कोविड के बाद सभी को बुलाया गया, बट ही वाज हैविंग सम इश्यूज एट होम, जो पहले नहीं जिन्होंने किया, काफी को ड्रॉप भी किया गया, जो भी सिनेरियो ऑब्वियसली सबको ऑफिस करना है। but he was दिक्कत ये है कि उसकी डिपेंडेंसी बन गई। अब जिन प्रोजेक्ट्स में वो काम करता है, इतने अच्छे से करता है कि पीपल और टीम इज डिपेंडेंट ऑन। जब आप अपनी डिपेंडेंसी बनाते हो ना कहीं पे भी, एंड यू, आपको फिर करने की जरूरत है, नेवर ऑफ अफ्रेड ऑफ। तो वो सिनेरियो है कि आज वो एक्चुअल में सिंगल हैंडेडली एक पूरी एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के लैंडस्केप को, जिसमें उसका लैंडिंग जोन है, टेराफॉर्म, आपने आई बिलीव नाम भी टेराफॉर्म एंसिबल स्क्रिप्टिंग चलती है उसके ऊपर। उसके बाद उसका पूरा एडब्ल्यूएस का लैंडिंग जोन क्रिएशन, जिसमें कि एक्सेप्शनली वायबल, मतलब कुबरनेटिस में छोड़ दो, ईसीएस वगैरह के पूरे क्लस्टर, कॉग्निटो एपीआई गेटवेज होती हैं, और उनको प्रोफेशनल वे में क्लाइंट के साथ डील करता है। क्लाइंट इज वेरी फिनिकी। कौन है? आईबीएम के साथ। आईबीएम के टॉप लेवल के इंजीनियर्स आर गेटिंग वेरी हैंडसम, और उनका एक्सपीरियंस है 15-15 साल के बाद। वो बंदा 2 साल के एक्सपीरियंस वाला, कोई बंदा बोल नहीं सकता कि इस बंदे को लेस देन मनी है। तो इस हिसाब से उनसे बात करता हूँ, और कभी कभी उनके पॉइंट्स को, मतलब पीपल अप्रिशिएट लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड थिंकिंग। मैंने कॉल्स में देखा होता है। तो अभी भी कभी फंस जाते हैं ना, जब प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारे नरेन, ये क्या अभी बैंगलोर में बैठे होंगे, तो ही नॉट वेरी मच टेक्निकल, बट जब भी कभी फंसने वाला होता है नरेन, तो वो पता नरेन को बहुत पता निकाल देगा वो। कैसे निकालेगा? नॉलेज बेस गेम किया,
सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ली। नीरज हमारे सीपी है जो, वो कहीं पे अगर आज की डेट में कहूँ ना किसी बिल्डिंग में कहीं सकते हैं वो, या क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती है, दिस सीपी ऑफर एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव वेरी लीडरशिप बैठी हुई है, VP एवीपी है, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स बैठे हैं। बट कभी कुबरनेटिस को लेके अगर कोई भी क्लाइंट मीट पे जाना है, नीरज प्रेफर टू टेक hiring with him, maybe on virtual meet. उसको कॉन्फिडेंस उसने इतना बना दिया कि बस कल को क्लाइंट कोई भी क्वेरी कर देगा ना उस चीज को लेकर, ही इज मास्टर, वो घुमा लेगा कहीं ना कहीं से निकाल। उस वो लेवल ऑफ जब आप एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी अपने अंदर इंकलकेट कर लेते हो ना, तो आपकी एक्चुअल में डिपेंडेंसी बन जाती है बंदों के ऊपर, बंदे आप पे डिपेंड करना चाहिए। तो जब वो सिनेरियो आ जाता ना, तो एक साल के बाद ऑब्वियसली जो अप्रेजल रिव्यू होता है, अप्रेजल रिव्यू होता है ना, जब लोगों की सैलरी बढ़ती है, तो हर जगह पे वो माइंड आता है, हर बंदे के दिमाग में होता है कि किसको नॉर्मल अप्रेजल रेट आता है 7%, 8%, कोई मुश्किल से 10%। इन बंदों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या नहीं होता है, जो है बहुत एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली 1000%। कहाँ से आया? डायरेक्ट इंटर्न से जब आता है, तो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी। तो ये जो फील्ड है ना, कंप्यूटर साइंस, पैसे की कमी है नहीं, तो अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो आज मैं मिल जाता हूँ हमारे ओरेकल में बैठे, हमारे ओरेकल के साथ पार्टनरशिप है, तो बहुत सारे क्लाइंट सीएस में बैठे हैं, आया ओरेकल हम प्रोडक्ट्स भी देते हैं, हम सर्विसेज, हमारी माइक्रोसॉफ्ट के साथ गोल्ड पार्टनरशिप, अज़ूर के ऊपर क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं हमारी, जैसे NSPI और कैनेडा, हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, इट्स आर वेरी वेरी हैप्पी, मतलब अच्छे लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। IBM के साथ हमारी टीम कोलैबोरेट कर रही है, हमारी टीम जो यहाँ बैठती है खासकर में, IBM बोलता है कि ये हमारे बंदे आउटसोर्स करने हो हमें, और सामने थर्ड पार्टी क्लाइंट के पास जाता है, वहां पे उनको IBM के ID कार्ड्स मिले हैं, हर एक चीज, उनको IBM की मेल IDs मिली हुई है, दे आर ऑन HR रोल्स। जो HR का हुआ था ना पूरा मेल लेटर सब कुछ, उनके किंडर के नाम से उनकी मेल आईडी है, किंडर के नाम से उनको एक्सेस मिले हुए हैं, किंडर के पूरे इंटरनल जो सिस्टम है, जो उनके लैंडिंग जोन है, उनके ऊपर वो पूरा अच्छे से जाके घुस सकते हैं। ये चीज है मैं एम्प्लॉय, तो आप लोग भी नए हो, वो बंदा भी नया नया आया था, एकदम से ना एक्सपोजर मिलना, तो वो बंदे रैक्टर में काम कर रहे हैं, वो बंदे IBM में काम कर रहे हैं, तो मतलब they are getting their CPC in crores, not less than that. तो फिर हम ये नहीं कर सकते काम। तो sky is the limit for your CPC. And the point is how you present yourself. आप अपने आप को कहाँ स्टैंड आउट करते हो? अगर और एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आप उनसे सीख सकते हो, आप उनसे इंटरेक्ट करके देख सकते हो, वो हमसे कोई डिफरेंट नहीं है, हमारे जैसे ही है, बस उनकी थिंकिंग जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है। वो टारगेट जानते हैं अपना, वो जानते हैं कि मेरे को कहाँ से नॉलेज, तो वो कैपेबिलिटी आ जाएगी ना, ऑब्वियसली। हम भागते हैं चीजों के पीछे, देन लोग आपके पीछे भागते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी है, अगर आप चीज को अच्छे से समझ सकते हो, या फिर मतलब आप अपनी डिपेंडेंसी बना सकते हो, then कहीं पे भी आप ड्रॉप हो, क्या करना है? कुछ नहीं करना। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी ओपनिंग होती रहती है, कहीं पे भी प्रोजेक्ट ओपनिंग साथ में है, नहीं नहीं, अगर आपकी एबिलिटी है आपको प्रोजेक्ट में अंडरटेक किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट के लेवल ऑफ योर एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस इन द सेंस जितना आपको आता है, आपको वहाँ पे वो पोजीशन दी जाएगी कि भाई अगर आपको टेक्निकल लीड बनाना है, टेक्निकल लीड इज वन हु इज लीडिंग द टेक्निकल एफर्ट। टेक्निकल लीड एक पैकेज होता है, मतलब एक पॉइंट होता है कि भाई इसका इतने से इतने तक ही होता है, दैट इज समथिंग गुड, हैंडसम।
और ज्यादा अच्छे से सीख जाओगे 2-3 साल तक, तो टाइम लगेगा जब आप चीजों को कॉस्टिंग को एस्टिमेट करना सीख जाओगे, चीजों को आर्किटेक्ट लेवल पे आ जाओगे। Good handshake है। और अच्छे से सीखोगे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट लेवल पे आओगे। फोर्स वाली बात की पहुंच, मतलब पॉइंट क्या है, पूरी उम्र अगर धीरे धीरे चलोगे तो एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बनने में अप्रोक्सीमेटली 15 साल। और अगर आपने वो वाला मेथोडोलॉजी अप्लाई जो उन्होंने अपना, कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 साल में मैं देखता हूँ उनको कि वो बंदे अगले 3-4 साल में उस हिसाब से उसको। तो पॉइंट इज, हमें तो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना। हमें ये नहीं सोचना कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहे। वो हर वक्त कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। तो ये नहीं देखना था कि मैं अगर बैंगलोर में आया हूँ तो मेरे को अगर 9 to 6 जॉब है तो 9 to 6 ही सोचूंगा टेक्नोलॉजी, बाकी तो मैं अपने दूसरे करूंगा ये जो भी। तो माइंडसेट यूज करते हैं। शुरू के 3-4 साल होते हैं यार, अभी कुछ कर लोगे ना शादी के पहले तो कर लोगे, उसके बाद आपका टाइम डिवाइड होगा। वेरी फ्रैंक ऐसा ही होता है, फिर आपका पूरा टाइम आपका नहीं रहे। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? थोड़ा सा टाइम है आपके पास, राइट सर। यस सर। तो अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना पूरा, मतलब फिर उसके बाद तो, उसके बाद अगर बोलोगे कि मैं टेक्नोलॉजी में एक्सेल करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपका 50% टाइम तो चला गया, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नहीं दोगे तो लाइफ अच्छे से नहीं रहेगी, आगे स्मूथ नहीं रहेगी। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चीजों को सीखने की कोशिश। कमिंग ऑन टू अगेन द पॉइंट, यहाँ पे हम थी, हमसे डॉक्टर इमेज एलएस करने पे ये हमने बता दिया कि भाई, अब समझ आ गई ना आप लोगों को, डॉक्टर जो इमेज रहती है उसके लिए जो रिपोजिटरी बनती है कि कौन कौन सी फील्ड्स होते हैं, इमेज एलएस कर क्या रही है, इमेज आईडी होती है। अब जब भी मेरे को नई डॉक्टर इमेज बनानी है, व्हेन आई नीड टू बिल्ड द डॉक्टर इमेज, कमांड विल बी लाइक डॉक्टर बिल्ड डैश पी। पी इज हमें टीटीएल, मतलब आईटीओटी में क्या टर्मिनल को स्टार्ट करना होता है। जब भी डॉक्टर के साथ हमें इंटरेक्ट करना है तो किसी ना किसी वे से मैं कमांड दूंगा ना उसको, वो होता है टर्मिनल के थ्रू। दैट मीन्स टर्मिनल एक्टिवेट हो जाएगा और ये नाम होगा जिस नाम से मेरे को डॉक्टर की इमेज का रखना है। पूरा नाम में पहला पार्ट रखूंगा उस नेम स्पेस का जो मेरे डॉक्टर हब के अकाउंट का है, ताकि आसानी से मैं इसको पुश भी कर सकूं बाद में, मतलब वहां पहुंचा भी सकूं। इमेज ही ऐसी बनेगी, पूरा नाम क्या होगा, पहला नाम, फिर उसके बाद ये एक्टिव रिपोजिटरी का नाम, और कोलन के आगे होगा उसका वर्जन नंबर, जिसको हम टैग भी कहते हैं। और लास्ट में डॉट लगाना। डॉट लगाने का मतलब कि जिस फोल्डर में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस डायरेक्टरी में बैठा हुआ हूँ, वो वहीं पे जाके डॉक्टर फाइल को ढूंढेगा। तो डॉक्टर फाइल का नाम मेरे को DOCKER विदाउट स्पेस FIL ही लिखना है। वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर इंजन जाके उस डायरेक्टरी में डॉट अगर लगा हुआ है तो ढूंढेगा एक डॉक्टर फाइल नाम की कोई फाइल पड़ी हुई है। अगर वो मिल गई उसको तो फिर वो उसको पार्स करके जो जो उसमें कमांड्स लिखी हुई हैं उनको चलाना शुरू कर देगा। समझ आ गई कैसे? अब मैं आपके सामने ये वाली कमांड चलाता हूँ, जिसमें मैं किस वाले फोल्डर में हूँ। सबसे पहले मैं हूँ इसमें, अगर मैं PWD करूँ तो मैंने डॉक्टर ट्रेनिंग के एक पैकेज रखा हो लाइट HTTPD डिप्लॉयमेंट नाम से। इसमें क्या है, एक डॉक्टर फाइल है जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, जो लाइट HTTPD इंस्टॉल करती है। और इस HTML नाम के फोल्डर के अंदर जो जो भी मेरी पड़ी हुई हैं फाइल्स, नेटली और आगे से वेब इमेज, वेबसाइट के जो वेब पेजेस वगैरह हैं और JS जावास्क्रिप्ट फाइल, वो सारे इसके अंदर कॉपी करेगा, एक डॉक्टर फाइल बनाएगा। करूंगा क्या मैं, क्योंकि ये इसी फोल्डर में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं डॉक्टर बिल्ड डैश टी। अब रिपोजिटरी यही है, और अगर करूँ लाइट HTTPD इसी नाम से है, LIGHTTPD, और कोलन लगा के, क्योंकि V1 पहले से बना हुआ, अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ V1 है। मैं अगर कर दूं HTTPD कोलन V
टू आगे ट्रेनिंग, V2 ट्रेनिंग, ये पूरा मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसका वर्जन नेम क्या, V2 ट्रेनिंग नाम से इसका मैंने नाम दे दिए और डॉट कर दिया। अगर तो अब क्या करेगा ये बिल्ड करेगा बेसिकली। ये सबसे पहले डॉकर बिल्ड कमांड क्या करेगी, टर्मिनल एक्टिवेट करेगी। जो भी आउटपुट आ रहा होगा ना उसका, तो टर्मिनल एक्टिवेट होने का मतलब मेरे को यहाँ पे दिखेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। साथ में क्या होगा, ये नाम से एक नई डॉकर इमेज बनेगी, और डॉट का मतलब किसी फोल्डर जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ डिप्लॉयमेंट के अंदर, जो डॉकर फाइल पड़ी है उसको पार्स करेगा, जो जो उसमें कमांड लिखनी है वो एग्जीक्यूट करेगा। किया जाए इसको, ठीक है। यस सर। अच्छा वो स्पेस लगा के डॉट दिया है, सो दैट इज पेज लगा के इसलिए देना है क्योंकि जब भी मैं कभी भी लिखता हूँ ना कोई भी चीज, तो अगर मैं डॉट डॉट मीन्स जो डायरेक्टली बैठा हूँ, जैसे मैं अगर कई बार ये ऐसा वाला अगर चल रहा है, लेट अस सी बिल्डिंग कंटेक्स्ट टू डॉकर डेमो, तो मतलब स्पेस के अंदर से यहाँ पे कि ये बेसिकली डिफरेंट फील्ड है, ये बताएगी कि कहाँ से। अगर मैं इसमें अगर फॉरवर्ड sir. स्लैश करके होम करके समथिंग देता ना, तो वो उस डायरेक्टरी के अंदर की डॉक्यूमेंट फाइल को ढूंढता। डॉट का मतलब Okay. जहाँ पे बैठा हूँ वहीं से उठा लो। तो ये स्टेप्स आना शुरू हो गए। ये क्या किया इसने, बिल्डिंग कंटेक्स्ट दिया डॉकर डेमन को, डॉकर इंजन को जाके। फिर स्टेप 1 चला, मैंने पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, उबंटू से, इसने वहां से एक उबंटू नाम की इमेज को डाउनलोड कर लिया, कॉपी कर लिया। स्टेप 2 में इसने क्या कहा था कि apt get अपडेट एंड apt get install लाइट HTTP, इसने सेम यही किया, इंस्टॉलेशन कर दिया। कितनी तेजी से हुआ सारा कुछ। कॉपी किया इसने HTML नाम के फोल्डर को उस डॉकर इमेज के अंदर की एक फोल्डर स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट में उसने 80 नंबर पोर्ट को एक्सपोज कर दिया, और फिर लास्ट में उसको जो कमांड चला दी, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ उसको एज ए सर्विस को चला देना, कर दिया। इसने कहा सक्सेसफुली बिल्ट सो एंड सो सो एंड सो, एंड ये नाम से एक डॉकर इमेज बन चुकी है। अब मैं देख रहा हूँ, जब मैंने डॉकर इमेज ls किया था ना, मेरे पास सिर्फ लाइट HTTP की V2 नाम की एक टैग था, इसके अलावा लाइट HTTP नाम की कोई भी और इमेज नहीं थी। अब मैं फिर से करता हूँ, डॉक्टर इमेज ls, क्यों हो गया कुछ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है जो हमारा फेयर मेटल सर्वर है हाइपरवाइजर पे बैठा हुआ उसके नीचे, वो ओवरहीट हो रहा है। मतलब अभी लाइट ऑफ, एक सेकंड एक सेकंड ना। ओके, नाउ अब विजिबल है आपको ये सारा। अब देखिए यहाँ पे दो बन गए, एक यही नाम से जो रिपोजिटरी है उसका टैग V2 था, और एक बना V2 ट्रेनिंग के नाम से। अंडरस्टूड कि हमने जो अभी डॉक्टर इमेज बनाई वो बन गई। मैंने दिया था इसको V2 ट्रेनिंग। ओके, नाउ व्हाट विल बी सीन ओवर हियर इज, यहाँ पे V1 दिखा। अब मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट कमांड को चला के रन नहीं करूंगा अभी, मैं पुश करूंगा। पुश से क्या होता है, ये मैं जो भी अपना इस रिपोजिटरी में ये
डॉकर फाइल को सेंड कर सकता हूँ। तो अभी अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ये दिख रही है, जब मैं पुश सक्सेसफुली कर लूंगा मेरे को एक और यहाँ पे पुश मिलेगी। कैसे करना है? वो हाँ वो क्रिएट हो चुकी होगी। क्रिएट हो चुकी है डॉकर पुश, और पुश किसको करना है? जो मैंने अभी बनाई, ये बनाई थी अभी अभी। ये क्या कर रहा है कि प्रिपेयर करके, ओके, रिक्वेस्ट टू असेस इज डिनाइड, मतलब मेरे को पहले लॉग इन करना। अभी मेरे को उन्होंने लॉग इन असेस नहीं होगा तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। हाउ टू डॉक्टर लॉगिन नेम इज, Also, sir, sometimes we get error like nothing to do. So when does that appear? Like nothing to do error. Where you got this particular error? Nothing to do. while I was installing what Calling what? Docker, yeah, when I was installing Docker first time, so everything was fine, commands were good, but I was seeing this error, nothing to do. मेट भी जो कमांड आपने दी है उसमें कुछ आई बिलीव स्पेस वगैरह का या कुछ No, ऐसा no, ऑल्टर no, हो no, गया sir. हो। नथिंग टू डू नॉर्मली नहीं दिखता। Like it was just a doubt in my head. I'll see to it when are the cases it appears, all the cases. Instead of using your password, let's see what password. Login successfully. So here you need to give the login credentials first of your Docker Hub account. Okay. You will be giving the Docker, then you can always, now it is doing, it is preparing, and now it is pushing the created Docker image onto my Docker Hub account. And this thing digest is something, size is this much, and it is pushed. I need to see your here is, I'll be pushing. Now change occurred over here. One more tag, one more version is uploaded over here. Okay, but it is saying new version of same Docker repository with the new Docker image is there. So in this way, we can always version control the Docker images or a repository itself. Understood the process of creation of a Docker image
as well as process of pushing the Docker image onto your Docker Hub repository account. So no, the reason behind having a Docker Hub repository is, likewise, I have pushed this new file or new image onto my Docker Hub repository. You can always go and pull this by using Docker pull space Rajiv KU Sharma / light HTTPD colon V2 training. Right now, you can always go into your VM and try it out. In tag itself, write colon V2 training. At this particular instant in time, globally, if this particular repository is public itself, then globally anyone can consume this newly created Docker file onto his VM, laptop, Docker engine, or on Kubernetes platforms or automated platforms what are being spun by cloud service providers. Maybe AWS is using EKS, Azure is using AKS, Azure Kubernetes service. So this particular file will be available for all the services orchestrating containers globally. Understood? आगे समझ क्या बेसिकली रीजन क्या है इसका Yes, sir. डॉकर हब का main reason is whatsoever I am creating or whatsoever image I am creating over here is can be used by any of the team member, or in production environment also we can have the private repositories with the access to the private repositories using the keys or the authentication mechanisms whatsoever. In this way also we can distribute the Docker images so that they can be spun up upon into containers. Understood. Now the third one is Docker run. On any of your machine itself, like your VM or so, if you have pulled this new Docker image itself, you can always convert this Docker image into a container by using this run command. Means you are running the Docker container from a Docker image. So it will be like Docker run. IT means I need tunnel. Over there, only output console means terminal TTY out, where I are seeing that what process is done was being presented onto my terminal itself. So this traffic. IT means TTY. It will be taking input as well as giving output terminal by using this. And dash P means port number. This is port binding, or what we can say port forwarding, port mapping. So what it will do, the second one is the port number of container, what was exposed. In our this particular Docker image, we had written expose port number 80 means this particular container, when this Docker image will be converted into container, this will start listening to port number 80. So all the traffic should come to port number 80 over here. So in Docker, when Docker containers are being spun upon in the, over the Docker engine, it will create their own Docker networking. So like we have our virtual machine installed, and if we not be using the bridged mode, by default it will be using the NAT mode. So what is the difference between NAT mode and bridge mode in virtual machine or type 2 hypervisors? Anyone of you can explain? Difference between bridge mode, because in the very first task itself, most of you had changed the mode from NAT to bridge to have that particular VM within the Office network itself. You had done that process? Yes, sir. Like while installing itself, we switched to the bridged installation. So we didn't have, I don't think many had to go through that process. But So what is the difference between bridge and why people need to convert that particular into bridge like, mode? sir, in bridged mode,
like the IP addresses and all the physical address of any network are copied exactly. And in NAT mode, uh, I guess it masks some of your activities on the network, So and basically, the actual difference between bridge mode and NAT mode is that while using bridge mode, it will be consuming the IP address scheme of the host network. host OS, Means yes. the network whatsoever your host machine is connected to, may it be 192.168, anything. So it will be grabbing the IP address from via the DHCP of the host network. The DHCP means the router in your office itself has spun up upon a dynamic host controlling protocol named server, and that server is responsible for giving the dynamic IP addresses to all the machines. So when using bridged mode in a VM type 2 hypervisor, it will do what? It will create a bridge link between the host machine networking and the virtual machine networking part. So what virtually it will be doing? It will be consuming the virtual machine network will be in the same network space or IP address subnet of the host, so that they can communicate flawlessly. The difference in NAT mode is uh, in NAT mode, the internal network of virtual machines will be having some different subnet than the outer host network. If outer host network is communicating on 192.168.2 dot something or dot 3 dot something, so its subnet will be 192.168.3.1 / 128, made with the CIDR. So or / 27. What I can say, 27 means the 255 address space will be there. So mean they'll be communicating within themselves in the host machine or the host network of the office itself. But inside the virtual machine network, inside the hypervisor, type 2 hypervisor, which is VMware Player, so it will be spinning his own network made with of 10 series, 10.0.0.1 forward slash something. So they are now on different address spaces. One is having different subnet, another one is having different subnet. Now these two subnets can't, or IP addresses of these two different subnets can't communicate with each other on layer 2. So they need a router or route table to be configured so that the communication between different heterogeneous networks can happen. So in that particular point in time, if we want to assess the internal machines of VM, we need port forwarding or NATing or port mapping. What I had discussed with you in the previous session, that I want some of the IP address binded to some other IP address over some port, so that a tunnel can be created and so that a port network address translation can be done, communication can happen. Okay. In the similar way over here on Docker itself, when Docker engine runs, it don't use the address space of the host VM. If host is working on 192 series, it will be having its own address space. The containers whatsoever will be spun up upon the Docker engine will get a IP address, but that IP address will not be of host address scheme. Like it will not be having 192.168.2 dot something series of IP address. Container will not have that particular IP. It will be having some other IP address which is different from the host IP address. Means let it be 10.0.0.25. This will be different IP address assigned to the container itself. So because to communicate the web server, whatsoever is being spun up upon in the container, to have the communication of the web server to the outer world, it needs some sort of network. Docker engine will provide a Docker network to it, and Docker network will assign its own address to the Docker container. Now, how to communicate with the particular Docker container, which is being spun up upon by Docker engine, having a different IP address? Again, network address translation or port mapping will come into picture. We need to map the IP address of container to the IP address of the host machine over some port.
So what this particular line is doing is, this is saying this is port number of the host machine. This is our VM. And this is port number of the container over which the network translation, or what I can say, the communication needs to be. So in our case here, let us take an example. We want to use port number 8080 of the host machine, and in the Docker image itself, we have given port number 80 exposure. Means this particular container will be listening to the request on port number 80 because this particular port is given in the Docker file. And while creating the container or while creating the image itself, it is hard coded that this particular container will always be listening to port number 80. So for Docker container, port number is 80 because we have given in Docker file that port number 80 is being consumed. And we want to, and this port number 80 will be port number 80 of the Docker container IP address will then be translated to IP address of our virtual machine over port number 8080. And we need not to give IP address over here because IP addresses Docker will be aware of. Docker will be aware of the host IP address, host machine's VM IP address, and because Docker is giving the new IP address to the container itself, so it will be aware of the container's IP address also. Just we need to give them the ports over which translation needs to happen. Then we will be giving the actual name of the repository. Okay. So now what we have done, we have given all the parameters. This will be doing what? This will be converting this Docker image into a container and exposing the port number or Docker networking to the host VM. Here, host VM is the Ubuntu VM. This particular VM is the host one. Can you use the name Pranna? This is the host virtual machine over here. Docker is this particular. I have taken an SSH connection to this host VM. When I'll be running this, what it will do, it will take this terminal to a loop itself. Like it will give me it will take this terminal into a loop. I can't be able to run any other command on this terminal. I can always SSH in new session and can have a separate session of commands over there. But this session is now blocked by the port forwarding sort of thing, or this application is consuming this session. What I need to check over here is go to the web browser of the Firefox web browser of the host machine itself, and normally write the IP address of this particular host machine itself. You must be aware of loopback. In every virtual machine, 127.0.0.1 is a IP address of is a loopback IP address of the same machine whatsoever we are using. So I'm using the loopback address over here, and I'm saying because it is saying port number 8080 will be consumed over here by the host network. So I'll be giving the command to port number 8080. No. It will be redirecting the traffic onto the container itself.
And the container comprises of the web server listening to the port number 80 of the web server. What it is doing, it is exposing all the website contents to me. I can always surf upon the thing, all the anything. Now you understood basically how the things are gone. Got an idea how these Yes, containers sir. are spun upon? Yes, sir. Yes, sir. No, I want you people to do this all practically. You have the Docker repository. If you want, I can give you the this code Docker file as well as the web page pages onto the chat. I'll compress this into a folder, the Allied SQBD source code and Docker file as well as the, and you need to extract that onto your VM itself. You need to run and start practicing building the Docker image. Now, in that build process, just use your account name instead of Rajiv K. Sharma, your Docker Hub account name, and your basically name of repository. May it be your website one test whatsoever, along with the tag name, which is version. Create such sort of Docker file, Docker image, push that particular Docker image into your Docker Hub repository. After logging into to log in into the Docker this particular command is Docker login. It will then ask you for your username in command prompt, and then it will ask you for the password. You need to give the credentials. It will log into the terminal. Okay, then you will be able to push the created Docker image onto your repository using similar fashion, and then try to run it on different ports. Maybe because port number 80 you can't change. To change port number 80, what you need to do is you need to edit the Docker file, change this port number by testing the various combinations. Change this port number to may it be 8080 or 8081 or 81 only or anything. Then you can always run the Docker and need to put that particular port number in second section after colon. Containers is second one. Like if you are using 81 over there, you need to write only 81 over there. And this is what you can assign dynamically for VM network. Then the result should be like that in the host VM's web browser, you can be able to open the website. Got it? How the things? Yes, sir. Sir, but the port Fine. number we'll be defining while creating the container, right? Like Port number it's while automatically creating the assigned, but we can containers port change it. number, basically containers port number, which is second part, will be what is written inside the Docker file, which is exposed. Until All right, unless all that right. particular port number is exposed, you can't use that in second portion of this file because Okay. that will I be was inherited from this file. I installed the Docker desktop on Windows as well, like which is the GUI based easy version. But the coding part was like I wasn't able to access it in the 1 hour I discovered the application. So there I was looking for the port number. Basically, what I had told you yesterday only, that this particular Linux version of Docker Engine is very simple, very Yes, sir. easy to use. So And later that I particular, switched on the Linux version. that I had already told you yesterday itself. I had warned you up that just start using Linux one. That is very easy. Windows one is bit complex and it needs to be having tweaked in many ways. To start Yes, using, you sir. need to exactly start the Linux for Windows Yes. particular resource itself, and you need to switch over to many of the things, and you need to restart that particular Windows host operating system many times to Yes, get the sir. things in working. So I enabled the Linux and I was unable to clone the repository from Git in Windows. Mhm. So there I faced issues. So I uninstalled that one and came back to Linux itself on VM.
Just try testing all other combinations. Try testing the Windows distribution also. That will give you a bit of hands-on on Windows version also, and will make you understand very much concepts of Yes, sir. that particular. That is. So now the thing is, just try testing this particular Docker file. Try testing. I'll be putting this Docker file as well as the resources in the chat box itself. Try using these commands. I'll also be giving this particular Docker command itself, um, text file also. These are bit complex Docker commands, Docker files, which are used in some of other projects. Then another one using Python source code. So we'll be going on to these complex ones. First, start with very simple one. Try testing it out. And this particular Docker push, Docker run, Docker build, Docker image, Docker login, Docker tag means to basically rename the Docker repository itself. If let us take a case, if while building I have used the name xyz dot something or something, and I now want to change the name to something related to different repository which is on Docker Hub. So I can rename this by using the command docker tag the previous name whatsoever is existing on my VM, which is created on my VM, then change the name whatsoever should be on the Docker Hub. So now it will do what? It will change the nomenclature or name of the Docker image created on my system. Then I can always push that particular Docker image onto the Docker Hub using the Docker Hub credentials and the Docker Hub account name and repository name. So to push the Docker image onto the Docker Hub, it is mandatory that whatsoever you have created Docker image in your VM should relate to the account name and as well as the repository name whatsoever is created over there in Docker Hub. If there is no relation between both, then how it will know that on what repository, on what account I need to push? It is checking while pushing using this push command. First of all, it is checking what account name I need to push this on to and what is the repository name. And those particular things must be pre-built on the Docker Hub. If they are pre-built, then only you can push the things flawlessly. Let us take an example. If I will be pushing Docker push XYZ, then it will be, I have created some Docker build XYZ or something. Then while pushing, it will be seeing that where is XYZ account. As I told you earlier, the account names are globally unique. So it will be looking for XYZ account onto the Docker Hub. And it will require if the XYZ account is there or there in the Docker Hub itself relating to somewhere, then it will require the credentials, username and password of that account to log in so that it can authenticate and then push it out. Understood the part? Okay. So this tag command, build push, RMI is to remove the Docker image from your local VM to release the space used. Because whatsoever we are using here, it is consuming some of the space. Maybe some files are consuming 204 MB, something. They are consuming space on my local VM storage. What I need to, by using RMI command and giving the actual image ID, it will be purging that image or it will be deleting that image and releasing this space from my VM. Understood? So these are basically the various commands. Just practice these commands onto your Docker engine, whatever you have installed on your VM. Practice making the Docker images out of such Docker files itself. By doing the things. Practice pushing the things onto your Docker Hub account. Okay. Okay, sir. Fine. So let us wind up for today. The tasks for tomorrow, these are all the tasks what you need to complete by tomorrow itself. Tomorrow we'll be discussing on what you had done, what problems you had faced itself while doing these tasks itself. And, if time will permit, I'll give you very brief introduction of platform Kubernetes. Very, very brief. Okay.
So just as yesterday itself, post in the chat box at what topics we have covered today, so that that can act as metadata for you for future itself, so that you can always get the pointers from there and then can view the video, have the things. In this manner, you can train your mind to have the information extracted from the long sessions or long duration of what the discussions are. Okay. This way you can be able to relate the things out. Then you want to train your, I want your mind to be trained in a particular fashion so that can handle the pressure of the industry. Because industry is uh, unforgiving. It don't forgive anything. So you need to prepare yourself. Okay, that's all. Thank you for now. Just put all the pointers over there in the chat itself. And like yesterday, if you want, you can always put the document of Docker installation into the chat. So this is also a reason that I am saying that always prepare the document, because in actual project environment you need a lot of documentation. They'll expect you to write documentation for every single step you are doing. Before documentation, they'll not even give you permission to actually undergo that project. You will be having the getting to know about the run books, the build sheets. These are the various documents which needs to be prepared beforehand executing any of the tasks. Run books means, or build sheet means, if you are going to provision some sort of infrastructure or somewhere, you need to present in a build sheet document that these are the various parameters I want to define in my infrastructure. I want this much of memory. I want this AMI image. I want this instance ID of EC2, maybe R5 something. In a particular fashion, when you will be giving the document to the client itself, then he will brainstorm on that, that what costing it will incur. According to that, he will give you go ahead. Go ahead means approval for creating the resource. So before approval or before actual task, it needs you to prepare documents for that. Documentation is a very important part over there. And after that, you will have to write the run books. Run book means what actual steps you are going to take to actually perform the task itself. And those actual steps will be very low level design steps, like very every single step you need to define onto a document, and their security team then will ensure that these steps are not fiddling upon onto the security of their environment, so they are not any sort of threat for their environment. Then they'll approve that go ahead with the runbook. So now the thing will be upon you. Whatever is approved in the runbook, you need to do all the tasks in accordance to the runbook, and everything will be logged into the client's environment. Logging will be there. Your each and every command will be logged in their system. Then, if anything worse will happen, like a security threat, DDoS attack, or the client's P1 issue will occur, or what we can say, their actual production go down, and they'll incur a loss of, let us suppose, $10 million for 2 days. The things are gone down. Then you will be safe only if you had done the steps in a manner which is written in runbook, and the thing will be on the head of the person who has approved the runbook. So you will be safe that I have given the runbook for approval. He is the person or the senior who has approved my, from client side only. He has approved my runbook. No, just go and see the logs. I have used these steps only. I am free. No problem from my side. And if you had took some other sort of commands or from runbook only, then always they can ask that this particular person is culprit. Because of his command, they'll then politicize the issue. They'll say that due to this particular resource, the whole thing goes on, and you will be scapegoat. Understood? This is why the documentation is very important. That is why I was
telling you to prepare each and every single small documents, may it be mandatory or not, so that you can get the hands-on on document creations and that sort of thing. That will help you a lot in the actual environment. Okay, so let us wind up for today. Tomorrow, any other question by any of you? No, sir. Thank you for now. Thank you, sir. Thank you, sir.